GSAT-14 is realized as an extended C-band and Ku-band payload spacecraft. It is configured based on standardized I-2 K-bus. This spacecraft will have 6 extended C-band transponders providing pan-India coverage, 6 Ku-band transponders providing Indian mainland coverage, and 2 Ka beacons for propagation studies. The spacecraft is designed to be compatible with the developmental flight of GSLV D5. With a dry mass of 851 kilograms and a liftoff mass of 1,982 kilograms, with a guaranteed minimum operational life of 11 years. This indigenously built cryogenic stage has been painstakingly put together, an elaborate and complex modern-day marvel down to its finest detail. It is prepared to lend its wings to carry the GSLV soaring to success as the nation applauds.
console, please put ejector on mode 1 basis. Genesis console to logs console, ejector is configured in mode 1. Good afternoon and welcome to all the viewers Calling COT. to Satish Dhawan Space Go Center, ahead. the spaceport of India, Confirm pulses are off. located at Sriharikota, All radar pulses are off. around 100 kilometers from Chennai. I am Radhakrishnan, and with me my colleague Sri Alok, who will bring to you the live coverage of this very significant mission of Indian Space Research Organization ISRO. Confirm readiness. नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने वैज्ञानिक साथी श्री राधाकृष्णन जी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस समय इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के अभियान नियंत्रण केंद्र से आपको आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं। आज GSLV D5 द्वारा GSAT-14 उपग्रह का प्रक्षेपण दूसरे लॉन्च पैड से प्रस्तुत किया जाएगा और शायद समूचे राष्ट्र को 9 वर्ष की बधाइयां देने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। Today's mission is the developmental flight of Geosynchronous satellite launch vehicle GSLV D5. The launch vehicle will use the indigenously developed cryogenic upper stage, which is quite a technological challenge by itself. For the viewers, just a quick update on the overall mission. The orbit for this mission is the Geosynchronous Transfer Orbit, GTO, with the closest point to Earth called perigee at 180 kilometers and the farthest point from Earth called the apogee at 36,000 kilometers. So mission will be an eastward launch from Sriharikota. The overall liftoff mass of the vehicle is 416 tons and the launcher height is 49 meters. Look at the satellite that is on board the vehicle, GSAT-14 communication satellite weighing 1982 kg. जी हाँ, भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान GSLV की यह 8वीं उड़ान हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। ये इसरो का एक ऐसा अभियान है जिसमें स्वदेशी तकनीक से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हमारे तकनीकी विकास की कहानी स्वतः ही कहेगा। लगभग 49.1 मीटर ऊंचे GSLV का भार लगभग 416 टन है। ये प्रमोचन यान 3 चरणों से निर्मित है तथा इसका व्यास लगभग 2.8 मीटर है, किंतु इसमें लगने वाले धातु से निर्मित सुरक्षा कवच की तरह यूज किया पेलोड फेयरिंग 3.4 मीटर व्यास वाला है। इस यान से हम 2000 किलोग्राम भारी प्रदाय भार को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसके पूर्व GSLV मार्क 1 की 6 और GSLV मार्क 2 की 1 उड़ान हो चुकी है। आज की शाम हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया पड़ाव लेकर आ रही है जब हम इस प्रक्षेपण की सफलता के पश्चात क्रायोजेनिक इंजनों की तकनीक में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। Engine pressures are stable and temperatures are also stable. Log side it is 3 TO, FP1, FP2 are reading 64.2 Kelvin and 3 tops is reading 59.4 Kelvin. As you are aware, the main objective of this mission is to 3T perform the flight FP1 is testing of the indigenously developed 154.9 Kelvin, cryogenic engine and stage. FP2 is reading The 128.2 Kelvin and 49-meter tall FP3 is GSLV reading D5 vehicle is standing majestically 32.1 about Kelvin. 6 kilometers away from the Pressures mission are control stable. center from where we are presently seated. The vehicle is getting ready for takeoff at the opening of the launch window at 16:18 hours. That is 18 minutes past 16 Indian Standard Time. And we have a total launch window of 2 hours 13 minutes. Unlike the Sun-synchronous mission where we have a very narrow window of almost say 15 minutes, the window is quite large here, 2 hours 30 minutes, which primarily means from 16:18 hours to 18:45 minutes. That is almost 40 minutes past 6 o'clock. The launch is technically feasible. And this launch of GSLV is going to take place on the second launch hydraulic pad, system SLP. health checks are normal And the launch and of charging is GSLV in D5 progress. is the 8th flight of GSLV. As you may be aware, the first flight of GSLV D1 took place during April 2001, wherein it carried the Russian procured cryogenic stage. जी हाँ, आप ये दर्शक दीर्घा का एक विशाल दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये चेयरमैन इसरो के श्री राधाकृष्णन जी और दत्तन सर, श्री रामकृष्णन जी जो
डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर किरण कुमार ये और डॉक्टर प्रसाद जी जो विभिन्न केंद्रों के निदेशक हैं। इस समय हम लगभग 28 मिनट की दूरी पर हैं प्रक्षेपण से। आज के प्रक्षेपण यान GSLV के 3 संस्करण हैं, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। GSLV मार्क 1 के 3 उप संस्करण थे। पहले उप संस्करण में प्रथम कोर में 125 टन ठोस ईंधन भरा था और ये 1500 किलोग्राम के प्रतिभार को भूस्थैतिक अंतरण कक्षा में ले जाने में सक्षम था। इसे अब सेवा से हटा लिया गया है। दूसरे उप संस्करण में प्रथम चरण कोर में 125 के बजाय 139 टन ठोस ईंधन भरा था तथा 4 अतिरिक्त तरल ईंधन वाले स्ट्रैप-ऑन मोटर थे। ये 1900 किलोग्राम के प्रतिभार को भूस्थैतिक अंतरण कक्षा में ले जाने में सक्षम था। तीसरे उप संस्करण में प्रथम चरण कोर में 139 टन ठोस ईंधन भरा तथा 4 अतिरिक्त तरल ईंधन वाले स्ट्रैप-ऑन मोटर एवं 15 टन का तृतीय चरण जोड़ दिया गया, पर इसकी केवल एक उड़ान GSLV F06 की हुई थी। GSLV मार्क टी संस्करण में रूसी क्रायोजेनिक इंजनों की बजाय स्वदेशी तकनीक से विकसित क्रायोजेनिक लगाए गए हैं। आज का प्रक्षेपण यान GSLV D5 GSLV का मार्क 2 संस्करण है। Thank you very much, Alok. View of the Mission Control Center. We can see on your screen some of the mission executives who are very closely monitoring the checkout operations. The countdown right now is at minus 26 minutes. We have a lot of operations to be performed as we progress. CGC2 controlled event number 480 and 481 launches confirmed. standing majestically at the second launch pad. P2 pulsar on. Mission Control Center for you. The countdown is minus 26 minutes. P2 pulsar on. Now I would request the Doordarshan team to just play the very exciting and interesting moments of the GSLV launch campaign activities, which will involve integration of the various stage elements and the satellite. जी हाँ, भारत द्वारा विकसित व निर्मित 416 टन भारी प्रक्षेपण यान एवं 1982 kg भारी GSAT 14 उपग्रह के विभिन्न विषय में संक्षिप्त जानकारी के लिए प्रस्तुत है ये लघु फिल्म, जो आपको विस्तार से बताएगी कि किस तरीके से उपग्रह का निर्माण हुआ। ये आपके समक्ष विभिन्न वैज्ञानिक स्क्रीन पर डिटेल जो आंकड़े हैं उन्हें देख पा रहे हैं, उनका अध्ययन कर पा रहे हैं। उनके अवलोकन के पश्चात विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं जो कि एक प्रक्षेपण यान के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। The countdown is at minus 25 minutes. Video capsule please. हम लोग 25 मिनट की दूरी पर हैं। हम अपने टीवी टीम से गुजारिश करेंगे कि वो छोटी सी शॉर्ट फिल्म आप लोगों तक पहुंचाएं। 25 minutes and counting. Control MCC event number 479 completed. Roger. ये छोटी फिल्म आपको बताएगी कि किस तरीके से GSAT 14 और GSLV का निर्माण हुआ था। This is the first stage. The first stage, which is basically the solid stage. The first stage has been flagged off and brought to the second launch pad. As you may be aware, the first stage is the solid stage with 139 tons of propellant, and the fully integrated first stage, S139 stage, is primarily into 5 segments. So first hardware that moves to the launch pad is the core brace route, and after assembling all the 5 segments of the solid motor, the first stage is readied, and you have seen now the vented tender stage and the middle stage, which is already assembled to the first stage of the rocket. Event number 484. So प्रथम चरण में लगभग 5 घटक होते हैं। इन्हें अलग अलग बनाने के पश्चात इन्हें संयोजित किया जाता है और ये स्ट्रैप ऑन को साथ में जोड़ने के लिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाके मुख्य मोटर के साथ जोड़ दिया जाता है। So after assembling the first stage, you have seen on your screen the liquid strap-ons, which is getting assembled. So there are 4 in numbers, 4 liquid strap-ons assembled to the solid stage S139. This together forms the first stage of the GSLV launcher. जी हाँ, ये करीब करीब 19.7 मीटर लंबे 4 स्ट्रैप-ऑन्स L40 इंजन के नाम से जाने जाते हैं। विकास 2 इंजन हैं ये, और इन्हें S139 जो सेंट्रल कोर होता है, जो सॉलिड ईंधन, जो ठोस ईंधन भरा होता है जिसमें, उसके साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और इसका व्यास
2.1 मीटर L40 इंजन का और 2.8 मीटर करीब सॉलिड मोटर का होता है. On your screen is the most important stage for today's mission, the cryogenic stage, which has been indigenously developed by Indian Space Research Organization. This is the view of the indigenous cryogenic stage with the main engine and two steering engines on either side. And the activity that you are seeing on your screen is the gimballing activity of the steering engine, which is primarily performed at the launch complex, at the launch base, as a part of checking out the cryogenic stage. The mission director, Dr. K. Shivan, briefing Dr. K. Radhakrishnan, Chairman Isro. And the cryogenic stage, after going through all the checkout operations at the technical complex at the launch base, is being transported to the launch pad after the first and second stage of the vehicle have been fully assembled. So a view of the cryogenic stage entering the vehicle assembly building. सबसे महत्वपूर्ण चरण जो होता है ये GSLV का इस समय वो क्रायोजेनिक स्टेज है. इसी क्रायोजेनिक स्टेज के निर्माण के पश्चात जो आप छोटा नीचे देख पा रहे हैं वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ऊपर हाइड्रोजन भरी हुई होती है और द्रव के रूप में, और इसे बनाने के पश्चात इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इसे प्रथम और द्वितीय चरण के संयोजित हो जाने के बाद जोड़ा जा सके. ये आप देख पा रहे हैं जो हमारे परियोजना निदेशक हैं श्री नागेश्वर राव जी, वो समझा रहे थे कि ये किस तरीके से उपग्रह का निर्माण किया गया. ये सौर पट्टिकाओं को क्लीन रूम में एक बार खोल लिया जाता है यहाँ पे, और उसके बाद इसे वापस संयोजित करने के बाद उपग्रह को पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसमें ईंधन भर दिया जाता है और उसके बाद इसे ले जाता है जोड़ने के लिए, संयोजित करने के लिए शील्ड के साथ, पेलोड फेयरिंग के साथ. Another interesting activity here you will notice is the satellite is getting assembled in the clean room conditions, not on the launcher. And after assembly of the satellite on the payload adapter, we have the payload fairing enclosing the satellite in the clean room. And the entire encapsulated assembly is brought from the clean room facility to the launcher, and it is getting mated to the launcher. Wherein in PSLV, you would have noticed the satellite gets assembled to the launcher on the launch pad itself. जी हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों PSLV और GSLV के संयोजन में. यहाँ पे GSLV में उपग्रह को पहले अलग से हीट शील्ड के साथ जोड़ दिया जाता है, पेलोड फेयरिंग के साथ जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल क्लीन रूम स्वच्छ कक्ष के वातावरण में, और उसके बाद इसे ट्रांसफर किया जाता है रॉकेट के साथ जोड़ने के लिए. राधाकृष्णन जी, ये खास अंतर जो है ये दोनों यानों के बीच में है. Actually, this the difference between the encapsulated assembly, wherein the satellite is getting assembled on the payload adapter, and then the payload fairing is closed in the clean room, and the entire assembly is moved from the clean room to the launch pad, assembled to the launcher. This is one particular concept, the way the hardware has been configured. And as far as the PSLV is concerned, what we primarily do is we carry the satellite from the clean room to the launch pad, assemble on the launcher, and then close the payload fairing. जी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही खड़े होने के बाद मेरे ख्याल से ये एक पूरे का पूरा समूचा व्यू आप देख पा रहे हैं यान का, जहां पे उपग्रह को सबसे ऊपर रखा गया है. सबसे ऊपर क्रायोजेनिक स्टेज काले रंग से देख पा रहे हैं, उसके बाद सबसे नीचे ये चारों स्ट्रैप ऑन मोटर के साथ जुड़ा हुआ यान, प्रक्षेपण यान, बहुत ही गर्वित स्वरूप में आकाश की ओर उड़ने के लिए तैयार. A very beautiful view of the GSLV D5 launcher on the second launch pad. And just now we heard the announcement, the countdown is at minus 19 minutes 25 seconds. And as we progress further at T-minus 90 minutes onwards, we will have a series of authorizations that will be going on, right from the vehicle director to the mission director. Just a quick update, a view of the countdown now, minus 19 minutes 10 seconds. Just a quick view update on the countdown process. If you look at the total countdown time for GSLV mission, it's a 29 hours countdown, and it began yesterday. And some of the major operations during the countdown process primarily involves electrical checkout and health check operations for the launch vehicle and the satellite, and most importantly during the countdown operations, the propellant filling operations. As you know, we have the solid stage, we have the earth storable liquid stages, and the cryogenic stage. So the solid stage is already a filled stage brought to the launch pad. The liquid propellants are primarily the ones which gets filled once the vehicle reaches to the launch pad. So these operations were performed yesterday. जी हाँ, अब हम प्रक्षेपण से केवल 18 मिनट 24 सेकंड की दूरी पर हैं. T-minus 19 मिनट पर अभियान निदेशक ने प्रक्षेपण की अनुमति दे दी है, और इस तरह से अब आगे की गतिविधियां
पूर्व नियोजित रूप से जारी रहेंगी। अनुमति की ये घोषणा So just T-minus 19 minutes, the mission director has authorized the vehicle director. अनुमति की ये घोषणा यान उपग्रह एवं भू केंद्र की विभिन्न प्रणालियों के पूर्व अवलोकन के पश्चात ही की जाती है, जो अनवरत रूप से उड़ान के विभिन्न आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। इससे ठीक 1 मिनट के बाद लगभग मेरे ख्याल से 5 मिनट लगेगा, T-14 मिनट्स पर यान निदेशक स्वचालित प्रक्षेपण अनुक्रम के आरंभ की घोषणा करेंगे। कुछ ही क्षणों पहले ये सिलसिला आरंभ कर दिया जाने की संभावना है। इस घटनाक्रम के पश्चात यान उपग्रह से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों का नियंत्रण प्रक्षेपण यान से जुड़े हुए कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। अब राधाकृष्ण जी, अगर हम अब दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से चारों तरफ जो प्रक्षेपण यान है उसके चारों तरफ विंड की स्पीड है, तो थोड़ा सा मौसम की जानकारी ले ली जाए। I think if you look at any launch vehicle for that matter, the meteorological environment plays a very important role. So if you look at the wind conditions, there are primarily 2 parameters that are very important. One is the ground wind. Ground wind is primarily the wind when the launcher is standing in the launch pad, and the wind that blows towards the launcher, making the vehicle drift towards the launcher. So one very important criteria for the launch is the ground wind. That is, what is the kind of permissible wind that is acceptable for the launcher. If you look at GSLV, you can see on your screen the launcher, the standoff distance of the launcher from the umbilical tower is quite far, which primarily means even if the ground wind conditions are little more, the drift of the launcher towards the umbilical tower is going to be very, very minimal, because we find a lot of clearance between the launcher and the umbilical tower. You can see on your screen now. So there is an upper limit at which like 20, 25, 30 meter per second is the ground wind conditions. But primarily before giving clearance to the launcher, the ground winds are measured well in advance. And as we had observed, today's wind measure conditions are roughly in the order of 7 to 8 meters per second. जी हाँ, इसका मतलब ये कि खासकर अभी जो गति है वो बहुत ही सामान्य है इस समय, और ये कोई खतरा नहीं है हमारे GSLV के प्रक्षेपण के लिए। और ऐसी सामान्य गति, क्योंकि क्लियरेंस काफ़ी है अम्बिलिकल टावर से और इसके बीच में, तो हमें ऐसा कोई खतरा अभी नज़र नहीं आ रहा है और बड़ी सामान्य सी गति है। और मेरे ख्याल से तापमान भी बहुत ही सामान्य है। समुद्र के किनारे इस तरह के जो हवा की गति है वो बहुत ही सामान्य महसूस की जाती है। अगर मौसम की बात करें तो पूरी तरह से प्रक्षेपण के अनुकूल प्रतीत हो रहा है। प्रक्षेपण यान उपग्रह एवं भू केंद्र की तैयारियों की समीक्षा के पश्चात प्रक्षेपण प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के साथ ही GSLV D5 को शनिवार 28 दिसंबर की सुबह लॉन्च पैड पर पहुंचा दिया गया था। प्रक्षेपण के लिए 29 घंटे की उल्टी गिनती 4 जनवरी की सुबह 11 बजे आरंभ कर दी गई थी। इसके दौरान यान के विभिन्न चरणों में द्रव ईंधन भरा जाता है, जिसे लगातार अवलोकित कर हर प्राचल की निगरानी बहुत सतर्कता पूर्वक की जाती है। प्रथम चरण में अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन 25% एवं N2O4 भरा जाता है, US-25। तत्पश्चात द्वितीय चरण में US-25 एवं N2O4, उसके बाद अंत में क्रायोजेनिक चरण में द्रव ऑक्सीजन व द्रव हाइड्रोजन भरने के बाद यान का कुल भार 416 टन पहुंच जाता है। अपराह्न 4:18 पर प्रक्षेपण विंडो खुल जाएगी। प्रक्षेपण कुछ ही क्षणों में संभावित है। वैसे प्रमोशन समयांतर काल कुल 2 घंटे 30 मिनट तक खुला रहेगा ये लॉन्च विंडो। राधाकृष्ण जी आगे का हाल बताएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं तो हम लोग लगभग 14 मिनट की दूरी पर इस समय प्रक्षेपण यान से। The countdown is at -14 minutes 10 seconds. Just a quick update on the countdown. As I was mentioning at the beginning of the countdown yesterday, the fuel and oxidizer were loaded into the second stage GS2, and once this got completed, the fuel loading in all the 4 liquid strap-on motors were also performed, which eventually was followed with loading of oxidizer in all the 4 liquid strap-on motors. In fact, all this got completed today very early morning. And just 4.5 hours from now, the filling of liquid oxygen in the cryogenic state was initiated. And this operation took almost nearly 2 hours, just 2 hours. And 2 hours before, the loading of liquid hydrogen was initiated, and this operation also lasted for nearly 1 hour. And now we have totally 200 tons of earth storable liquid propellants and 12.5 tons of cryogenic loaded into the launcher. राधाकृष्ण जी, क्रायोजेनिक जो चरण है इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी प्राप्त की जा सकती है? कोई
I think if you look at the cryogenic stage is primarily a highly technologically complex propulsion module per se. The main reason being the very low temperature conditions of the liquid oxygen, liquid hydrogen. इसका कोई वीडियो कैप्सूल अगर हम देख सकें तो I think it will be very interesting that we play a very short video for you, maybe around 5 to 6 minutes, which will primarily show you the technological challenges and the complexities of the cryogenic stage. Here is the video capsule for you. By the Indian Space Research Organization, ISRO. GSLV is a 3-stage launch vehicle. The first stage consists of a solid motor with 4 liquid strap-on motors. The second stage is a liquid stage. And the upper stage uses cryogenic propulsion. It is no idle boast to claim that the cryogenic upper stage is a masterpiece in the field of space technology and engineering. The cryogenic upper stage in GSLV consists of 2 separate tanks to carry 12.5 tons of liquid hydrogen and liquid oxygen. Liquid oxygen, LOX, an oxidizer, is required to be stored at minus 183 degrees Celsius, and liquid hydrogen, LH2, the fuel, at minus 253 degrees Celsius. The major subsystems of the cryogenic engine are the combustion chamber, gas generator, turbopump, and the startup system. In spite of the complexity and challenges, LOX and LH2 are still preferred propellants owing to their efficient performance and ability to produce maximum thrust and energy required to carry heavier payloads to orbit. The efficiency of the propulsion system is measured in terms of specific impulse. The specific impulse is defined as the thrust produced per unit mass flow rate of the propellant. The higher the specific impulse, the greater the energy produced per unit quantity of the propellant. The specific impulse of cryogenic propulsion is superior compared to that of solid propulsion and liquid propulsion. The cryogenic upper stage engine of GSLV is capable of developing a nominal thrust of 7.5 tons in vacuum. Producing cryogenic fluids is an arduous task. Hydrogen is not freely available in required quantities in the atmosphere, and hence has to be produced through complex chemical processes. It is at the Liquid Propulsion System Center, LPSC, that the first steps for producing hydrogen are taken. Once produced, these cryogenic fluids necessarily have to be stored in super-insulated storage tanks in order to minimize boil-off losses. The major challenges encountered are during transportation and servicing of the cryogenic propellants. Hence, the storage tanks, transfer pipelines, and transportation tankers are carefully designed